Jai Hind to you all, my dear students. Uh, Today I am going to make a brief lecture on this very important chapter, which contains 7 marks for the board. That is semiconductor electronics, materials, devices, and simple circuits. So let us move on this one. So before coming on this chapter completely, first of all, whenever we talk about the conductivity, the solids are classified into the three parts, three categories: conductor, insulator, and semiconductor. You must be knowing about it that conductors, which have the large number of free electrons, and because of that, it can pass the electricity through it. Insulators don't have any free electrons, or the electrons are tightly bound with their atoms, so that it cannot pass the electricity through it. While the semiconductor, name is semiconductor, the semiconductor's conductivity lies in between these two. That is, इस इतना अच्छा नहीं है कि आप इसको आप कंडक्टर कहो, और इतना बुरा नहीं है कि आप इसको इंसुलेटर कहोगे. सो इट्स कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर. तो चलो उसको देखते हैं कि आज के डेट में सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है. आप देखते हो कि we having the LED bulbs in our houses, semiconducting devices, so many devices. The most important thing is the mobile. The motherboard, all the things are maximum things are made of the semiconductor. The motherboard of the mobile, the motherboard of your laptop, okay, your DVD player, this even this smart board. Most of the part are the semiconductor. So because semiconductor has played a very important role nowadays in our life. अब देखना है कि सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या खासियत है कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफिंग समझते हैं, बहुत बेसिक को समझते हैं, आपके लेवल पे जितना है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके ज़्यादा डीप स्टडी आप करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको. सबसे पहले देखो बात करते हैं हम लोग इसके बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड की. तो बैंड थ्योरी की जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा केमिस्ट्री पे हम लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए. आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दैट, when large number of atoms are going to be interact, their energy levels are going to be interacted, and that's why they splits into the large number of uh, fine bands, and they will form the bands like this. Now, according to the Pauli's exclusive principle, the lower energy state occupies the electrons. These are the valence electrons, while this remains empty. So, according to this, this can be classified, this complete filled band called the valence band, this unfilled bands called conduction band, and these two bands are separated by a gap called as the forbidden or energy gap, right? So होलसेल थिंग्स, नटशेल में बात खत्म करें कि कौन सा सॉलिड आपका कितना बेटर कंडक्टर है, कितना अच्छा कंडक्टर है, सारी क्रेडिट उठाता है आपका कंडक्शन बैंड. लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंडक्शन बैंड में, बेटर विल बी इट्स कंडक्टिविटी. सो इसको देखते हैं हम लोग, conductor, insulator, semiconductor. How to classify it? And let me tell you one thing, this is a set question which can be asked in the board examination. Previously it has asked so many times. So question directly पूछा जाता है कि classify the solids, I mean conductor, insulator and semiconductors on the basis of the band theory. So these are the things. Listen the things carefully. You can make your own word and you can write it clearly. 3 marks. So one for this, one for this, one for this. Here, for the conductor, the conduction and the valence band overlapped. And because of that, while the overlapping, I'm trying to make it clear here. Suppose करिए कि
आपके पास एक बैंड है यहाँ पे जिसको मैंने व्हाइट से बनाया. This is your valence band. And another one I'm making it by the pink color. This is your conduction band. Okay. This valence band having large number of free electrons. So while talking about the not moving. Chalo, okay, I'm trying to explain it as such. जब आप बात करते हैं इसकी, तो आपने वैलेंस कंडक्शन बैंड को यूं बनाया. दिस इज द ओवरलैप्ड रीजन. ओवरलैप्ड रीजन. तो अल्टीमेटली देखो क्या हो रहा है कि वैलेंस बैंड का इतना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लाइक कर रहा है, और डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूं रूम टेम्परेचर की. सो these are the electrons which are ultimately lying in the conduction band. At there they are free to conduct the electricity. So this is the case when conduction and valence band overlap with each other, and the electrons available in the overlapped region are free to conduct the electricity. Otherwise, there is a very small gap in between conduction and valence band, so they will require a very small energy to jump the electrons from the valence to conduction band, and they will be free to conduct the electricity. ठीक है. बात करें इंसुलेटर्स की, तो आपका कंडक्शन और वैलेंस बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड, this is the valence band, separated by a very large gap called the energy gap or a forbidden gap. Already explained you, which of the order of greater than 3 electron volt. अगर डायमंड की बात करते हो तो this is of the order of 6 electron volt. So such a high energy cannot be even provided by the high electric field. So result, conduction band remains empty, and when conduction band remains empty, none of the electrons will be free to conduct the electricity. So this is the insulator. Now coming on the semiconductor. This energy gap is of moderate value, less than 3 electron volt. This is the order, depend on the material to material. So in that situation, due to the moderate energy level, I mean energy gap, few electrons from the valence band jump into the conduction band, and because of that, at the room temperature, few electrons are available in the conduction band. So if I compare this semiconductor with the insulator, I mean conductor, so few electrons are available in the conduction band as compared to the conductor. So that's why it is called a semiconductor. So this is the condition of the three solids, I mean conductor, insulator and semiconductor. So now coming on the next part of it, electrons and holes in the semiconductor. आइए जरा इसको देखते हैं. तो first of all, I am making it clear by the band theory. So this is your conduction band. This is your valence band. This is energy gap. So these are the bands. Electrons are here. Already told you कि we are not at all concerned with the number of electrons available in the valence band, because they are not going to definitely take part in the conduction. So when you increase the temperature, ठीक है, few electrons jump from the valence to the conduction, and definitely the provided energy should be greater than the value of this energy gap. Say that the value of energy gap is of order of 1 electron volt, so your energy should be greater than 1 electron volt. So electron will jump into the conduction band. आपका इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, and leaving the vacancy at this place.
ये white dot सबको दिख रहा होगा. So in that case, whatever number of electrons has transferred from the valence to the conduction band, the same number of vacancies will be created here. So अगर नाम की बात करा जाए तो this is called the free electrons and this vacancy जो create हुआ है इसको आप बोलोगे holes. इलेक्ट्रॉन नो डाउट आप जानते ही हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एंड द होल्स आर ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर. तो दीज आर द थिंग. ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा कि होल्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों आ रहा है. सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा इसको डिस्कस करने के पहले होल्स की जरा बात कर ली जाए, थोड़ी सी चीजें एक बार फिर समझते हैं इसको. तो इस पॉइंट पे देखो, होल्स जब हम डिस्कस करेंगे तो ये एक खाली जगह है, दैट इज अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन. अब खाली जगह का कोई मूवमेंट तो होगा नहीं भाई. हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक मोबाइल चार्ज पार्टिकल है दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय गिविंग द प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस टू इट. बट होल्स आर द वैकेंसी. अब खाली प्लेस चलेगा भाई कैसे, तो हाउ दिस हैज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इन द सेमीकंडक्टर. तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं. आइए जरा से देखा जाए, इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं. मान लीजिए हमने कुछ चेयर्स लिए like this. How many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and all the chairs are occupied by the person. ठीक, what I'm going to do, the chairs are treated as an empty space that is analogous to the hole, and the person seated on the chair are treated as the electrons. अब मैंने 9 नंबर ऑफ पीपल्स उस पर बिठा के रखे हुए हैं और मैंने कहा कि चल मूवमेंट कर. अब मूवमेंट कैसे होगा भाई, जब कोई उठ के अपनी जगह खाली करेगा तब तो, यानी ऑक्युपाइड है. नाउ चेंजिंग द एग्जांपल, आउट ऑफ द 9 चेयर ओनली 8 आर ऑक्युपाइड. चलो देखें, मान लीजिए कि आपने 8 लोगों को बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज द एम्प्टी वन. अब देखिए, नाउ दिस वन विल शिफ्ट टू दिस हियर, this one will shift to here, this one will shift to here, this one will shift to here. So the empty chair is now going to move in the opposite manner. So the person, the electrons are moving in an anti-clockwise manner, then the empty chair, that is the holes, are moving in an opposite direction. अब हम इसको जरा इलेक्ट्रोलाइट पे अगर लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जानते ही हो. तो पॉजिटिव आयन अगर राइट साइड जाएंगे तो नेगेटिव उसके अपोजिट चलते हैं. और आप जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन हम लोग हमेशा पॉजिटिव के अलोंग और नेगेटिव के अपोजिट लेते हैं. तो दिस विल क्रिएट अ करंट हियर, दिस विल क्रिएट अ करंट हियर, एंड ओवरऑल द करंट इज फ्लोइंग इन द राइट साइड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस. तो सेम हमारा यहाँ पे है कि in place in the semiconductor electrons are as it is, in place of positive and we have a holes. So that's why the holes are important in the electronics. Okay, so now coming on the next one, types of semiconductor. Semiconductor के टाइप को जब हम लेंगे तो आपका सेमीकंडक्टर क्लासिफाई हो जाता है दो पार्ट में. एक कहलाता है आपका इंट्रिंसिक और एक कहलाता है आपका एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक में जब हम डोपिंग करते हैं तो बनता है एक्सट्रिंसिक. अब सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक को समझते हैं. आपका कोई भी सेमीकंडक्टर जो प्योरेस्ट स्टेट में हो, जिसमें दो नाम आपका बहुत कॉमन आता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो कि दोनों के दोनों आपके 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं, यानी टेट्राहेड्रल है. So they have the 4 electrons in their outermost orbit. So these are the natural semiconductor without any adulteration. We haven't may add any impurity in it. So these are called the intrinsic semiconductor. So already I have explained all the things here. This is called the bond model. Earlier you have
Seen the band theory, this is the bond theory. What is this? These are the silicon or germanium, which is tetrahedral outermost orbit, 4 electrons. Now look at here. ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, फिर इधर आप आएंगे तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये दो, तो हर एक का ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने नेबर एटम्स के साथ मिलके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। अब आप अगर इसको देखते हैं एट द absolute zero temperature, that is 0 Kelvin, none of the electrons are free to conduct the electricity. It means if you talk about on the basis of the band theory, your conduction band remains empty. None of the electrons are available here. It means a semiconductor acts as a perfect insulator at the absolute zero. But once you start increasing the temperature, one thing, these two electrons can oscillate between these two atoms but cannot leave their bond. But once you increase the temperature, the number of electrons becomes free from the bond, and these electrons comes in the crystal, and at there that will be free to conduct the electricity. On the band theory, already I have explained the things. Ki 4 electrons has jumped from the valence to the conduction band, so 4 holes are created in the valence band and the electrons are in the conduction band. So आप इस केस में कह सकते हो कि नंबर एनी मीन्स नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ particles per unit volume, so E stands for electron, so number density of free electrons equal to the number density of holes, and these are called as intrinsic charge carriers. So this is a very important thing. इसको जरा समराइज कर लें. The intrinsic semiconductors are the semiconductors which are find in the purest state. ठीक है? At the absolute zero temperature, this will act as a insulator, but its conductivity increases with increasing the temperature, because when you increase the temperature, the number of covalent bond break and the electron becomes free, or you can say on the band theory, the number of electrons from the valence band jumps into the conduction band, and hence the last number density of electrons and the holes are equal, and these two are called the intrinsic charge carriers. Now, अभी तक हम लोग ये बात समझ गए कि if we want to increase the conductivity of a semiconductor, we have only one option, that is the temperature. ठीक, टेम्परेचर बढ़ाओ, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी. लेकिन एक प्रॉब्लम है, किस एक्सटेंट तक हम इसको बढ़ाएं, कितना करोगे भाई? टेम्परेचर बढ़ाने की भी अपनी लिमिट होती है. हर सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आ करके डैमेज कर जाएगा, तो उसको हमें कोई उसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा. सो डोपिंग के बाद आप इंट्रिंसिक को कन्वर्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक में. देन व्हाट इज डोपिंग? अभी आपका जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है वो 14th ग्रुप का है. अगर हम 14th ग्रुप के आसपास को 13th ग्रुप या 15th ग्रुप के एलिमेंट को उसमें ऐड करें, ठीक है, तो हम इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. और जिस प्रोसेस से आप एक्सटर्नल इंप्यूरिटी को ऐड करते हैं अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग. ठीक है, अब क्यों 13 और 15, क्यों नहीं 12, क्यों नहीं 16? What is the reason behind it? So let me tell you one thing, you know it very well. Your periodic table are arranged according to the atomic number or mass number. So as soon as the atomic number or mass number increases, the size of the atom also increases. But if you keep yourself close to 14, the size of these two atoms are almost equal to the size of this silicon or germanium. So when you add these two, say एल्युमिनियम मैंने यहाँ लिया, यहाँ पे मैंने जो है फास्फोरस को लिया या आर्सेनिक को लिया, इनको डोप किया, तो इनके जो साइज हैं वो ऑलमोस्ट सिलिकॉन या जर्मेनियम के साइज के बराबर ही होंगे. इसकी वजह से ये क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा. So that is the reason why we are adding 13 and 15 group. Why not 12 or 10 or 18 or 17 like this, right? So this is the doping. Then definitely after doping, your intrinsic semiconductor has become extrinsic. अब extrinsic के बारे में हम लोग जाने.
तो एक्सट्रिंसिक आपका फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एन टाइप एंड पी टाइप। सो एक इसको जनरलाइज करते हैं, इसको समझते हैं। तो इसको पहले आप यहां से क्लियर कर लीजिए एंड देन, या चलो देखो, सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम है। इसमें आपके सारे एटम्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। ओके, एक एटम को हम लोग यहाँ पे देखिए, तो मान लो सिलिकॉन तुम्हारा ये है, इसके पास अपना खुद का 4 इलेक्ट्रॉन और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया हुआ है। सपोज करिए कि आपने इसमें ऐड किया आर्सेनिक को, जो कि पेंटावेलेंट है। क्या करेगा आर्सेनिक, जब यहाँ आएगा तो इस सिलिकॉन को अपने चारों इलेक्ट्रॉन के साथ यहां से रिमूव करेगा, एंड दैट सिलिकॉन कैन बी एडेड एनीवेयर, एंडलेस ब्रांच चाहिए। सो नाउ out of the 5 electron, because arsenic is a pentavalent, 4 electrons are involved in the bond formation, while the 5th electron remains attached with arsenic. But since this electron is not in the bond, so it can be easily detached by providing a very small amount of energy of the order of almost 0.01 electron volt. So this electron is free, so treated as free electron, right? So this is the story, कि when you are going to add a pentavalent substance, per atom you are getting 1 electron, जो कि इसके पहले नहीं था। पहले आपका बॉन्ड टूट के ही इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो रहे थे, अब ऐसा नहीं है। आप जितने एटम डोप करेंगे पेंटावेलेंट, उतने पर एटम आपको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। सपोज करो कि आपने 100 एटम आर्सेनिक के डोप किए, तो आपको 100 इलेक्ट्रॉन एटम्स मिल गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके लिए, कि अगर मैंने यहां पे ट्राईवेलेंट को ऐड किया, से एल्युमिनियम, so this will having 3 electrons, valence electron, so 4th place remains empty। ठीक है, एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज की वैलेंस C3 है। अब उस 3 ने वही किया, एल्युमिनियम आएगा, सिलिकॉन को हटाएगा, उसके चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 3 इलेक्ट्रॉन तीनों को बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दिया, चौथी जगह खाली रहेगी। अब ये खाली जगह, वेरी क्लियर, दैट इज होल, राइट? तो ये आपका बना दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। देखो, electron being as a negative charge particle, so this is called as n-type semiconductor, while hole, the vacancy hole, is treated as a positive charge carrier, so this is called as p-type semiconductor। why type? सीधे सीधे हम क्यों नहीं बोलते कि नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया? नो, एन टाइप पी टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं, क्योंकि आप जब एटम डोप कर रहे हैं, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज इट्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन quantities remains the same, so you have added atom, not ion. So due to this, number of electrons and number of protons are balanced, and therefore the crystal before doping was neutral, and after doping it will be neutral. Therefore n type and p type both are electrically neutral. But since per atom you are getting one extra electron,
electron is negatively charged, so it is called the n type, and p type because of the vacancy created here. So now coming on the next one, this is the thing which I have already explained here. You can take it here. The 5 valence of substance has doped here and 1 free electron you are getting. Now this atom can donate 1 electron because this atom has 1 extra electron. So this atom can donate electron to anyone whosoever is required. So after providing small, I already explained, a small amount of energy, this electron can be detached and that electron will become free to move inside the crystal. So अब ये इलेक्ट्रॉन आप किसी को भी दिया जा सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डोनर एटम। ठीक है, ये आपका कहलाएगा डोनर एटम, और ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब एक चीज और देखिए, यहां से क्लियर है कि डोनर कोर या डोनर एटम कहिए इलेक्ट्रॉन, बट मैंने कहा ना कि दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट ओनली टिल दिस इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज इन अपनी जगह पे वहां पे मेंटेन है। अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो आप इस पे, आपको पता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। सो दिस डोनर एटम विल बिकम पॉजिटिव चार्ज्ड। ठीक है, सो वंस अगेन द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ free electrons. Electrons are attached with the donor atoms. Once the electron detached from the donor atom acquires the positive charge. Am I clear? So coming on this next one, so p type, positive type, already explained. आपने ट्राइवेलेंट को डोप किया है, खाली जगह मिली, दैट इज कॉल्ड होल। अब देखो इसका नेचर क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है कि दिस कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन रीडीली प्रोवाइडेड टू इट। सो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा, और ये आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये देखो कि जब तक इस एटम का होल्स इसके पास है वो न्यूट्रल है, बट once it will acquire the free electron, then it will acquire a negative charge here. तो चूंकि देखो this atom are having a nature to accept the electron readily, so this is called the acceptor atom. Acceptor atom, and the vacancy is called the hole. But once this vacancy will be filled up, then it will acquire a negative charge. तो ये आपका हो गया एन टाइप और पी टाइप है। जरा बैंड थ्योरी से भी इसको देख लेते हैं हम लोग। तो बैंड थ्योरी के लिए भी जरा थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूं मैं। देखो उसको कि एन टाइप की बात करें, हाँ, जो भी हम लोग देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 केल्विन, ऑब्वियसली आपने जो डोपिंग की उसने आपके एनर्जी गैप के अंदर ये एक एनर्जी लेवल क्रिएट कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं डोनर लेवल। फ्री इलेक्ट्रॉन सारे यही हैं। अभी तक क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन, बट नाउ immediate these electrons will jump into the conduction band while getting this small, very small amount of energy that is of the order of 0.01 electron volt. कहां आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑलमोस्ट दे रहे थे, कहां आप 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास के दे रहे हो। तो ऑब्वियसली we are defining the conductivity of the semiconductor at a very low energy. So ultimately we can say the conductivity of the semiconductor has increased. जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो यही है। चलिए पी टाइप की भी बात कर ले। पी टाइप में आपका जो एनर्जी लेवल जो है, आपने जो डोपिंग की थी, दैट विल लाई जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, एंड दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी बिकॉज वहां तो इलेक्ट्रॉन है नहीं भाई। अभी आपका क्या था, इफ यू वांट टू क्रिएट द होल्स, देन इलेक्ट्रॉन हैज टू बी सेंट इन द कंडक्शन बैंड प्रोवाइडिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी 3 वोल्ट और बिलो दैट। बट अभी क्या है कि ये ऑर्डर बहुत कम है, आपका 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखो यहाँ पे आफ्टर एन टाइप हम पी टाइप पे आते हैं। आपने जो ट्राइवेलेंट सब्सटेंस को डोप किया है उसका जो एम्प्टी एनर्जी लेवल है दैट विल लाई जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, और ये खाली है चुकी। तो देखो अभी तक क्या हो रहा था, अगर होल को क्रिएट करना है, होल कहां क्रिएट होंगे भाई, वैलेंस बैंड में।
तो ये आप इलेक्ट्रॉन को पहले ऊपर भेज रहे थे, यानी कहां, कंडक्शन बैंड में, इतनी एनर्जी दे रहे थे आप। बट ये ऑर्डर आपका बहुत कम है, 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके आपको खाली जगह मिल रही है तो यहीं पे जाएंगे। तो आफ्टर प्रोवाइडिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम होल्स को क्रिएट कर सकते हैं। और अगेन ये चीज बता रहा है कि चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, आप कम एनर्जी में आप जो है कंडक्टिविटी को बढ़ा ले जा रहे हो। ठीक है, ये हो गया एन टाइप पी टाइप। अब जरा सा बात कर लेते हैं हम लोग मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की, जिसमें अक्सर आपका कंफ्यूजन होता है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की देखो बात करें तो मेजॉरिटी की बात जब भी समझ लेना कि हम मेजॉरिटी को डील कर रहे हैं तो मतलब हम उन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात कर रहे हैं जो डोपिंग से आते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज कम फ्रॉम द डोपिंग, while minorities are generated by the thermal excitation। बॉन्ड टूटने से जो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे वही आपके इसमें जाएंगे। ठीक, ये भूलना नहीं है आपको कि whenever we talk about the majority charge carriers, these particles come from the doping, while minorities come from the thermal excitation because of the breaking of the bond, the holes and electrons are generated। अब हमने पढ़ा कि for intrinsic Ne is equal to Nh equal to Ni, but for extrinsic either it is of N type or of P type, we take it Ne into Nh equal to Ni square। That formula has to be learned। We will solve the numericals on this topic। चलो देखते हैं फिर आगे। तो अब आती है बारी, द क्रूशियल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन is p-n junction, which plays a very important role in the p-n junction। तो what is this? अब p-n junction का मतलब ये नहीं समझते हम कि p टाइप और n टाइप को लेके अलग अलग आपने किसी ग्लू से जोड़ दिया, नेवर। इसको ऐसे समझो कि I have a chalk stick, now I have a two color of ink, blue and a red। half of the chalk is dipped in the red ink and the rest in the blue ink। अब देखो क्या होगा कि जो जंक्शन बनेगा, इधर आपका ब्लू इंक पार्टिकल है, इधर आपका रेड इंक पार्टिकल है, तो डेफिनेटली ब्लू इंक पार्टिकल रेड की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। तो दैट blue ink particle diffuses towards the red side and the red ink particle do the same, that diffuses towards the blue side। सेम क्या करते हैं हम लोग, एक सिंगल वेफर लिया जाता है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, उसके हाफ पार्ट पे आप ट्राइवेलेंट सब्सटेंस और हाफ पे पेंटावेलेंट सब्सटेंस को रख के इसकी हीटिंग कूलिंग की जाती है। and because of that these elements going to burst inside it and p type and n type semiconductor are formed and a junction will be created here। ये तो चलो बात होगी कि हाउ द जंक्शन इज मेड हियर, पीएन जंक्शन। बट इस जंक्शन पे होता क्या है, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं, ये चीजें देखते हैं हम लोग। तो देखो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके एक्सेप्टर एटम है विच इज न्यूट्रल टिल इसके पास होल प्रेजेंट है। once it will take an electron the negative charge will appear here। in the same way n टाइप सेमीकंडक्टर में आपके डोनर एटम्स हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो तभी तक न्यूट्रल है जब तक इलेक्ट्रॉन उनके पास है। once it will donate its electron to anyone it will acquire a positive charge। now अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने जा रहा है। देखो once the junction will be formed, treat it as a blue ink and a red ink, the electron will diffuses towards p side and the p holes will diffuses towards the n side। that electron will be missing here, the electron will be missing here, and in the same way the holes will be missing here। result, the charge will appear in this belt only in this side, this is remaining neutral as it is। अब देखो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या है भाई, एक बेल्ट आपका बन गया। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास दो प्लेट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और हमने वहां पे एक सेल कनेक्ट कर रखा है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, इस बेल्ट का क्या एडवांटेज है या क्या रोल है, देखो this will create an electric field inside it directed from N to P। अब
अगर और इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा तो इसको रिपेल कर देगा, बिकॉज आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हाइल द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मगर यहां क्या कंडीशन बन रही है, अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना है तो दे हैव टू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा। रिजल्ट सेम फॉर होल के लिए। रिजल्ट, अब इस बेल्ट में कोई मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा, कोई चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। ऐसा प्लेस जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीट रीजन। सो दिस इज कॉल्ड अ डिप्लेशन रीजन। ओके, एक तो हो गया। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, डेफिनेटली आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब इसका रोल क्या है, दैट एक्ट एज अ बैरियर फॉर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये अब इलेक्ट्रॉन होल को, मेजॉरिटी को रोक रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग और नाम देते हैं, कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। दो चीजें हैं, वंस अगेन डिप्लेशन रीजन एंड देन अ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 लिया जाता है। तो अब आगे देखो, जैसे ही जंक्शन फॉर्म होगा, द मोमेंट जंक्शन विल फॉर्म, इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी, और आप जानते हैं, और होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एम, एंड यू नो इट वेरी वेल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन along the direction of flow of positive charge and opposite to the direction of flow of negative charge. Since majority charge carrier can diffuse, therefore an electric current will form directed from P to N, that is your current is this is called the diffusion current. ओके, तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो डिफ्यूजन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पी टू एन। कौन बनाएगा इसको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। अब बात करते हैं माइनॉरिटी की। देखो, पी टाइप में आपके होल्स तो मेजॉरिटी में है मगर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, इक्का दुक्का। एंड द सेम एन टाइप में आपके होल्स जो है वो माइनॉरिटी में है। सेम इस बेल्ट में भी कुछ ना कुछ तो माइनॉरिटी होंगे ही होंगे, ठीक है। और अभी देखो क्या हो रहा है कि जो मैंने सिचुएशन ली है, द मोमेंट जंक्शन फॉर्म होगा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों का मूवमेंट शुरू हो जाता है। और जब ये मूवमेंट शुरू हो जा रहा है तो एक तो आपने देख लिया कि मेजॉरिटी के कारण आपको डिफ्यूजन करंट। अब आप वापस जाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, वहां हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी हुई थी कि व्हेनेवर यू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, देन because of the formation of electric field inside the conductor, the free electrons move opposite to the direction of field, drift opposite to the direction of field. That velocity, average velocity of the electrons are called the drift velocity. So drift velocity is formed because of the electric field. तो यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फॉर्म कर गया है। अब बात करें माइनॉरिटीज की, तो आपके पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है और होल्स एन टाइप में है। यहां देखो क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड खुद अपनी तरफ खींचेगा, ड्रिफ्ट कराएगा और होल्स को इधर पुश करेगा। बिकॉज ऑफ दैट एक करंट आपका इधर को फॉर्म करेगा, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये जंक्शन का जो बैरियर विड्थ है वो बढ़ता जा रहा है, डिफ्यूजन करंट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को प्रिवेंट किया जा रहा है फील्ड के कारण, ये धीरे धीरे घटेंगे तो हम ये कहेंगे कि ड्रिफ्ट करंट, सॉरी डिफ्यूजन करंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड अप्रोचेस टू द वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट करंट। एक टाइम आया कि जब दोनों बराबर हो जाएंगे, अपोजिट आप देख ही रहे हो, तो वहां पे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम रीच करेगा and width of this barrier will become maximum. This is called the maximum stage when your PN junction has reached, where the no current will flow in that condition and potential barrier will form at their maximum width. This is the whole sole condition of the PN junction. So अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ की बात कर लें तो आप एक ग्राफ यहाँ से देख सकते हैं, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ अगर लेंगे तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो ऑब्वियसली पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ता हुआ पाओगे। इसके बाद का पोर्शन एकदम फ्लैट ही जाता है, कोई चेंज नहीं होंगे। तो जो भी वेरिएशन है वो इन बिटवीन द बेल्ट। ठीक है, अब तो भाई चलो ये आपने सिचुएशन को देख लिया कि दिस अराइजेस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन, और क्या क्या चीजें जंक्शन पे फॉर्म हो गई। अभी तक हमने इसको कोई नाम नहीं दिया सिवाय पीएन जंक्शन के, और इसमें अभी तक हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस का बाहर से एप्लीकेशन नहीं लिया है। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो अभी देखो इसका नाम अब हम देंगे, दैट इज कॉल्ड अ पी एन जंक्शन डायोड। Symbolically it will be represented like this. This is your p type, this is your n type. Obviously this arrow is showing the direction of flow of diffusion current, which will be formed by the majority charge carrier, right? So this is the diode. अब diode का मतलब होता है duo plus electrode। ये आपका डायोड का मतलब हो जाता है। ठीक है, अब जरा सा हम डायोड को पावर सप्लाई देंगे। तो पावर सब ये देखिए आपका जो है सब दिखा दिया यहाँ पे। अब जब आप डायोड को पावर सप्लाई देते हैं तो आप उसके नाम को कहते हैं बायसिंग। दिस इज द बायसिंग ऑफ अ डायोड। तो बायसिंग की बात करोगे तो डायोड का बायसिंग दो पार्ट में क्लासिफाइड है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, बिकॉज डायोड हैज टू टर्मिनल्स, वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डोंट फॉरगेट रेजिस्टेंस के भी दो टर्मिनल होते हैं, बट इसके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, लेकिन डायोड का आपका पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो फॉरवर्ड बायस के लिए पहले हम देखें क्या करेंगे हम लोग। तो जब हम पी टर्मिनल को डायोड के बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। या मोस्ट जनरलाइज्ड वे, when p terminal is at high potential and n terminal is at low potential, then the biasing of the diode is said to be forward. On the other hand, if you are connecting the p terminal with negative terminal of the cell or battery, then an n terminal with the positive, then the biasing of the diode is said to be reverse. Here the current will flow, and that is along the direction of arrow, so definitely this is diffusion current. But here the current will flow opposite to this one, so this is the drift current. So this current will be formed by the majority charge carrier, and this current will be formed by the minority charge carrier. So once again, a diode is said to be forward at forward bias when p terminal is at high potential. आप ज्यादा अच्छा होगा इसको आप इस तरह से याद रखो, when p terminal is at high potential and n terminal is at low potential, then the bias is said to be at forward bias. अब इसमें क्या हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो आप डायोड एक बनाते हो, इसका जो पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस होगी वो कम हो जाएगी फॉरवर्ड बायस पे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आप यहां पे डायोड को देखते हैं, इसकी पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस एक्सपेंड कर जाती है बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस। तो इसका मतलब हम ये कहें कि जो बैरियर है उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकना या होल्स के फ्लो को रोकना या मोर जनरल चार्ज कैरियर्स को रोकना। और आप जानते हैं कि जब चार्ज के फ्लो के रास्ते का रुकावट होता है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। सो दैट इज वेरी क्लियर कि एट द फॉरवर्ड बायस द डायोड इज ऑफरिंग अ वेरी लो रेजिस्टेंस, एंड एट द रिवर्स बायस द डायोड इज ऑफरिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आइडियल डायोड के कॉन्सेप्ट की। आइडियल डायोड उनको कहा जाता है which offers zero resistance at forward bias and infinite resistance at reverse bias. So this is the situation. So जरा सा IV characteristic या you can say the VI characteristic को हम कैसे बनाते हैं, and how the figures can be drawn here. So remember the Ohm's law. Ohm's law आपको अगर याद है तो पहले देखिए आपने एक डायोड बना लेना है। हम पहले फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें मिली एम्पियर लगाइए, देन सेल लगाइए, देन अ रियोस्टेट,
then a key, and across the diode voltmeter, terminals, and when talking about the reverse, then microampere because current will be formed by the minority, then rheostat, then key, and then a voltmeter. So see the difference. So if graph is plotted for this variation, how it will look? You have done the experiment on this one. So whenever you plot a graph like this, it will comes like this. And यहाँ पे आप देखिए एक पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। अभी ग्राफ देखो क्या ट्रेंड शो कर रहा है कि अप टू दिस नी वोल्टेज द करंट इंक्रीजेस वेरी स्लोली, but after the knee voltage the current start increasing abruptly after increasing a very small voltage. Why? Definitely यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ होगा। अब आप देखो इसका रिजल्ट क्या आता है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस फॉरवर्ड वोल्टेज का बढ़ाते हैं, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस धीरे 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 कम होने चली जाती है और एक वोल्टेज आता है जिसपे ये डिसअपियर कर जाता है। उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन होल्स का माइग्रेशन फ्रीक्वेंट होने लग जाता है एंड दिस इज द रिजल्ट। टॉकिंग अबाउट द रिवर्स, यहां पे रिवर्स के लिए ग्राफ को हम लोग को इस तरह से देखो मिलेगा। इस पॉइंट को जहां पे करंट में अचानक से तेजी आती है दैट इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेकडाउन के बारे में डिस्कशन अभी थोड़ी देर बात करते हैं, अभी पहले इसको देख लो। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो कमिंग ऑन द नेक्स्ट देखें और क्या आता है फिर। अब आपके लास्ट सेक्शन पे हम आ रहे हैं। इसके पहले आपका जो भी कहा कि व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज, व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन, इसको देखो यहाँ पे बताते हैं। एवलांच वर्ड को सब लोग जानते ही हैं आप लोग। व्हेन यू आर अप्लाइंग द फॉरवर्ड वोल्टेज दैट इज नॉट गोइंग टू दैट मच हाई, 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट लाइक दिस। और आपने इलेक्ट्रोस्टैट में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, work done equal to charge into this one, and according to the work energy theory this is equal to the kinetic energy. Kinetic energy is directly proportional to the potential difference applied, and Q आपका यहाँ पे E हो जाएगा, whatever whether it is an electron or a hole। तो अगर आपका वोल्टेज 3 4 5 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी कम है, इलेक्ट्रॉन चलते समय क्रिस्टल से टकराएगा लेकिन बॉन्ड तोड़ेगा नहीं। बट आप रिवर्स पे जाते हैं तो आपका वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि आपको पोटेंशियल बैरियर की अच्छे खासे थिकनेस को ओवरकम करना है। एंड वंस द इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कोलाइडिंग विद द बॉन्ड एंड स्टार्ट ब्रेकिंग द बॉन्ड, एंड वंस द बॉन्ड विल ब्रेक, इलेक्ट्रॉन एंड होल रिलीजेस, and the quantity of electron and holes increases tremendously, and because of that the amount of current increases. That is called the breakdown voltage. And why it is called the knee voltage? Because it looks like this, the bented knee shape it takes. The knee voltage where the potential barrier disappears. So coming on the last segment of this one, let us have an application. But before that, याद रखेंगे आप कि diode offers low resistance at forward bias and high resistance at reverse bias. If talk about the ideal diode, offers zero resistance at forward bias and infinite resistance at reverse bias. So what is rectifier? So rectifier is a device which converts AC into DC. AC इनपुट आप देते हो एंड आपको DC आउटपुट मिलता है। आपके मोबाइल का चार्जर है, सेट टॉप बॉक्स का अडॉप्टर है, ठीक है, इसके अंदर भी आपके स्मार्ट बोर्ड के अंदर भी ये लगा हुआ है, बिकॉज सेमीकंडक्टिंग डिवाइस कैन नॉट रन ऑन AC।
उसको आपको डीसी देना ही पड़ेगा। तो डीसी का एक ऑप्शन आपके पास सेल है, बट सेल इज नॉट फिजिबल एट एवरी ईच एंड एवरी प्लेस। तो हम एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपका रेक्टिफायर दो पार्ट पे क्लासिफाई होता है, हाफ एंड फुल। चलिए पहले हाफ को समझते हैं क्विकली। दैट इज अगेन अ वेरी इजी टॉपिक and important too. So first of all, I have taken a step down transformer which is not necessary, but 220 volt is stepped down by the step down transformer, and you are getting a low AC voltage. This is AC input, not this one. ये मेन है, ठीक है। आप 3 वोल्ट लो, 5 वोल्ट लो, लाइक आपके मोबाइल के लिए 5.7 वोल्ट चाहिए होता है, तो आपका चार्जर का जो अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एंड दैट ट्रांसफार्मर फर्स्ट स्टेप डाउन द 220 वोल्ट आरएमएस व्हिच यू आर गेटिंग एट होम into 5.7 volt, and that is given to a single diode, and this is the load resistance. आपके मॉस्किटो रिपेलेंट की मशीन को देखेंगे तो उसमें एक एलईडी जलती रहती है, उस एलईडी को अगर डीसी नहीं दोगे तो वो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे यही काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि फंक्शन बड़ा सिंपल है इसका। तो इसके फंक्शन पे अगर हम लोग आते हैं तो आप देखिए कि जब आपका देखो इनपुट और आउटपुट किधर बनाया होगा, हाँ ये है, चलिए। जब ए पॉजिटिव होगा तब बी नेगेटिव होगा। इस कंडीशन पे आपका डायोड है फॉरवर्ड बायस, और इसकी प्रिंसिपल ही यही है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस पे होगा कंडक्ट करेगा, लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और रिवर्स बायस पे होगा तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एंड कंडक्ट नहीं करेगा। So A is positive, B is negative, then diode is at forward bias, and the diode current will flow through the diode, and hence the current will flow through the load resistance, whatever you have applied, maybe LED or maybe your devices, whatever. So for this cycle, say this is the input cycle, the first half you have got the output, but once this will be negative and B will be positive, the diode will be at reverse bias, offers infinite resistance, and the current will not flow through it. ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे, for this portion you are getting the output, but for this portion this remains empty. So for one complete wave you are getting the half output, and that's why it is called the half wave rectifier. ठीक है, देखिए जरा इसका सिग्नल जो मैंने बनाया हुआ है ये है यहाँ पे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि फॉर दिस वन यू आर गेटिंग द आउटपुट, फॉर दिस वन नॉट, देन अगेन दिस वन यू आर गेटिंग द आउटपुट, फॉर दिस वन नॉट। सो आपको करंट रुक रुक के मिल रहा है, फॉर दिस वन एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली हमारे बहुत सारे डिवाइस पे रन नहीं करेंगे, देन व्हाट टू डू? So the option is to fill up this gap. What to do this? Then we are making the full wave rectifier. So पहली चीज देखो यहाँ आती है कि the transformer which we are using having the 3 output terminals. This is called the central tap. इसकी खासियत होती है कि this always be at 0 volt. So if this will be plus, this will be minus. This will be minus, this will be plus, but central one will always be at 0 volt. So let us understand this. So once this A will be positive, at that time B will be negative. So diode D1 is at forward bias and D2 is at reverse bias. Check karo. P terminal is at high potential, N terminal is at low potential. So this is the forward bias, this will be the reverse bias. The current will flow through it and the current will run like this. Current is flowing from X to Y. So for this input, we are getting the output. We are getting the output. Which diode has provided the output? D1. Now changing the cycle. Now B is positive and A is negative. So definitely D2 will be at forward bias and D1 will be at reverse bias.
So in that condition, the current will be supplied by the diode D1. Current will go like this and then coming there, because current will not go here because resistance of this diode is very high, and again the current will flow from X to Y. So again the direction of current same. So obviously we are not going to make it downside. So whether the diode D1 works or D2 works, you are getting the current continuously. So the gap has already filled up and you are getting the current continuously. So that is your full wave rectifier. Okay. So this is the topic which is in your syllabus only. So go through it, since the rectifier is a very important one and a very few topics are there in the semiconductor. You must go through these topics, and स्पेशली इसको तो बहुत अच्छे से सब लोग पढ़ लेना, क्योंकि दैट मे बी द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द एग्जामिनेशन. चलिए बच्चों, एक चीज यहाँ पे देखिए और आता है कि वी हैव लर्न अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में एक चीज आई थी कि इफ यू हैव अ ट्रांसफॉर्मर which has only 3 terminals, in which the central one is called the central tap. It is of 0 volt always. Then too we have learned all the things. लेकिन ये, although it is not directly in the syllabus, but I am telling you precautionally, the topic which I am going to teach you, that is called bridge rectifier. And what is bridge rectifier? So you have the 2 terminal transformer. The output terminal is not 3 but 2. So you have to use the 4 number of diodes. Like this. And this is your load resistance. So rectifier is very clear, which converts AC into DC. But why it is called bridge rectifier, that we have to understand. देखो, it was under the channel, and how it is, देखो, so if A is positive and B is negative, then what happens? The channel, this is going to work. Why? A is positive, B is negative. So देखो, this diode is P terminal connected with positive and this diode N terminal connected with negative. While we talk about the other two, D1 and D3, हम अभी ले रहे हैं D2 and D4. D1, the negative is at high potential and D3 positive is at low potential. So these two are the reverse bias, while D2 and D4 will provide the current and that will flow. अगर इसको मैंने X मान लिया, इसको Y मान लिया, and the current is flowing from X to Y, ठीक है, from the load resistance. When the cycle is reversed, situation will be now this time D3 will provide the current. Here is D3 and D1. Why? Just have a look here. A is negative, B is positive. So in that situation, जो डायोड पहले फॉरवर्ड था वो रिवर्स पे चला जाएगा, और जो रिवर्स था वो फॉरवर्ड पे आ रहा है. देख लो, P is at high potential, N is at low potential. So the current will flow like this, and direction of current is again from X to Y. So in this condition, आपको करंट का डायरेक्शन हमेशा X to Y मिला. और इसमें मॉडर्न गैजेट्स जितने भी आपके हैं, चाहे आपको मोबाइल चार्जर हो या आपका
सेट टॉप बॉक्स का अडॉप्टर हो जो ब्लैक कलर का डब्बा होता है, या फिर इसके अंदर लगा हो, ये भी हो, हम लोग इसको ही यूज करते हैं ज्यादातर। ये कहलाता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। अब देखो ब्रिज क्यों कहा गया इसको, बिकॉज एक डायोड के रहते दूसरा डायोड उसके लिए एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है, और अगर ये ना हो तो आप खुद देख सकते हैं कि करंट विल ब्लॉक इन दैट सिचुएशन, यू आर नॉट गोइंग टू करंट गेट द करंट। Advantage, you have no need to make the two coil transformer which is used in the central tapping. तो हम लोग का एक ही कॉइल में काम चल जाता है टू टर्मिनल्स में, जो कि थोड़ा इजी होता है बनाने के लिए। नाउ लेट अस हैव सम न्यूमेरिकल्स। द फर्स्ट वन इज question is, suppose a pure silicon crystal has 5 into 10 to the power 28 atoms per cubic meter. ठीक है, it is doped by 1 ppm concentration of arsenic. So calculate the number of electrons and holes concentration given that Ni is equal to 1.5 into 10 power 16 per cubic meter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो पढ़ा था Ne is equal to NH equal to Ni. So Ni is already given to you, which is no doubt thermally generated electrons and holes. But after the doping, अब arsenic dope कर रहे हो आप, arsenic is pentavalent, तो आपने इतने एटम के ऊपर 1 ppm यानी 10 टू द पावर 6 की डोपिंग की है, तो आपको आर्सेनिक सीधे एनी देगा। तो एनडी, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स नियरली इक्वल टू एनी इज इक्वल टू 5 into 10 to the power 28 and divided by 1 ppm, 1 part per million. So that is equal to 5 into 10 to the power 22 per cubic meter. That is your Ne. So one answer though we have got, the number of electrons. Now what are the holes? As Ne into Nh is nearly equal to Ni square, so Nh is equal to Ni square upon Ne. Then Ni is already given to you, 1.5 into 1.5 into 10 to the power 16, double कर दो 32, and divided by Ne which you have got इतना, तो that is equal to कितना आ जाएगा आपका 0.45 into 10 to the power 10. So this is 4.5 into 10 to the power 9 per cubic meter. एक बार अपना कैलकुलेशन सब लोग चेक कर लेंगे. So this is the way कि 1 ppm is used. ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा भी जा चुका है कई बार. So this is the way. So moving on the next one. कुछ एक ही जैसा क्वेश्चन है. A semiconductor has equal electron and hole concentration of 6 into 10 to the power 8. So this is what? This is what? Equal electron and hole concentration. Definitely Ni आपको दिया गया है. On doping with certain impurity, electron concentration increases to, it means that is Ne. So calculate the new hole concentration. So again we will apply the formula Ne into Nh is equal to Ni square. So Nh is equal to Ni square upon Ne, that is 6 into 10 to the power 8 into 6 into 10 to the power 8 and divided by 9 into 10 to the power 12. Solve it and get your answer. So that is equal to 4 into 10 to the power कितना आ जाएगा ये 4 cubic meter. So identify the new semiconductor obtained after doping. So electron concentration has increased. So definitely Ni is greater than, Ni is what? 9 to 10 power 12. Here is 10 to power 4. So definitely number 2, as Ne is much greater than Nh. So the semiconductor will be N type. So coming to the next, तो ग्राफ को देखते हैं. This is the graph shown to you and that is very clear. कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन को, मैंने वही क्वेश्चन उठाया जो जनरली पूछे गए हैं.
देखो, from the graph you were asked to calculate the resistance of the diode at first one is ID is equal to 15 milliampere and VD is equal to minus 10 volt. अब भाई देखो 15 मिली एम्पियर ये रहा, इस पे आप बीच में अगर आप आते हैं तो 0.5 और 0.8 के लमसम में आप जा रहे हैं, तो इसके इधर और इसके इधर ये काम आपका बिल्कुल इजी कर दिया गया है. आप इस बेल्ट को पकड़ो, तो फॉर द फर्स्ट पार्ट डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.8 minus 0.5, that is 0.3 volt. And ID delta I is equal to, clearly in that belt is range of this one, that is 20 minus 10 is equal to 10 milliampere, and that is 10 into 10 to the power minus 6 ampere. So the R, इसको dynamic resistance कहते हैं हम लोग, याद रखना, that R dynamic is equal to delta V upon delta I, that is 0.3 upon this will be equal to 10 power minus 2, and that is 3 into 10 to the power 2. Overall is how much it is? 30 ohm. Next part, VD is equal to minus 10 volt. अब देखो यहां से तो मामला बिल्कुल आसान है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एंड द करंट इज 1 माइक्रो एम्पियर. तो ये आपके लिए डायरेक्ट ही है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है. तो दैट R is equal to V upon I. V is your 10, I is 1 into 10 to the power minus 6, that is 10 into 10 to the power 6, and this is equal to 10 to the power 6 ohm. आप चाहें तो इसको मेगा ओम किलो ओम में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is how you are going to tackle the graph questions. So coming on the last section of this one, जो कि आपसे कई बार पूछा जाता है. पहला देखो, calculate the current supplied by the battery of 4 volt. ठीक है, when positive terminal of battery is connected at A, obviously the negative will be with B, and second, when negative terminal of the battery is connected with A. तो पहला सिचुएशन लोग देखते हैं. For the first one, when you are going, this one is positive and this one is negative. So say I will call it, this is D1 and this is D2. So अच्छा, next thing, nothing is written about the diode, and if nothing is mentioned about the diode, then you will treat the diode as an ideal. An ideal is फॉरवर्ड पे जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और रिवर्स पे इनफाइनाइट. तो D1 का P टर्मिनल हम देख रहे हैं पॉजिटिव से जुड़ रहा है, तो D1 offers the forward bias and D2 offers the reverse bias. In that condition, D1 is at forward bias and then offers zero resistance, तो उसको आपको मेंशन नहीं करना है. Only you will show this resistance and this whole circuit is going to be out. And then 4 volt cell is here according to the question, 4 volt is mentioned here. And then current की बात कर रहे हैं आप, then I is equal to V upon R, that is 4 by 10 equal to 0.4 ampere. Now coming on the second one, सेकेंड पे आप आते हो तो आपने इसको माइनस किया, इसको प्लस किया, and definitely this time D2 will be at forward and D1 will be at reverse. So this will offer the zero resistance and then the circuit will be like this, and this is your 20 ohm 4 volt as such, and then I is equal to 4 by 20 यानी कि 1 by 5, that is 0.2 ampere. So this is the way to solve this question. Only you have to see the biasing of the diode, which one is at forward and which one is at reverse. So let us have the last one. Find the current in each case of the following circuit. I am just dealing one, rest 3 you can solve at yourself. So
I am taking the third one, this one. देखो अगेन ना, अच्छा ऑलरेडी रिटर्न कंसीडर डायोड एज एन आइडियल, चलो ठीक है। तो not third, I'm just taking this one. Now look at here, this P terminal is connected with positive and terminal with negative, so this one is forward and this one is reverse. So this is going to be offer a very high resistance, but this will offer the low resistance path. So these two are connected in parallel. You can very well understand what is going to be happen. The current will flow through this one, and then you can find out the current like this. Again I equal to V by, जो भी देखो देखना है यहाँ पे यही देखना है। अगेन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या होने जा रहा है। यहाँ पे आप देखो कि both the diodes are connected like this, so both the diodes are at forward bias and offers the zero resistance because diode is an ideal, so current will flow। और यहाँ पे आप निकालेंगे I is equal to 2/20, that is 0.1 ampere। Similarly here this is forward and this is reverse, तो ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये करंट को ब्लॉक कर देगा and the value of current will be 0। तो आप जब भी सर्किट को सॉल्व करें, टेक इट एज एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, जो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बैस पे है उसको आप सर्किट का जीरो रेजिस्टेंस को हटा देंगे और उसको बाकी के रेजिस्टेंस को लेकर के अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया हुआ है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई थिंक आई हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स, सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।